Hello everyone. In this video, we'll be solving questions that came in Informatics Practices Board Exam in 2023. So इस साल हमारे जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे. So let's start. The first question which came in the paper was, which of the following topologies is very efficient and all nodes are connected to a central hub? तो जब भी हम central hub की बात करते हैं, then we actually use a star topology. Within the star topology, we use either a central hub or a switch. So the correct answer is your star topology. Next question. Ramandeep is a young woman with great aspirations and has a good team of like-minded people. She, along with her team members, started a company to sell handicrafts online and also designed a logo for their company. So she actually made a logo for their company. What type of intellectual property does this logo represent? So whenever we talk of the logos, in that case, all the logos come under your trademarks. So the correct answer is trademark. The next question is, which of the following is a type of cybercrime where objectionable and demeaning comments are posted on social media platform about a person such that he or she is mentally harassed? तो मेंटली हरासमेंट हमारी साइबर बुलिंग से होती है. सो द करेक्ट आंसर इज योर साइबर बुलिंग. Whenever we demean someone so that the other person gets mentally harassed, then that comes under your cyber bullying. So we had 4 options: phishing, hacking, identity theft. So these are all different options. So the correct answer is your cyber bullying. Next question is, which of the following is the correct output of the following SQL command? So whenever we execute any select command with round, what happens is we have here it's mentioned (2). So (2) means we will we'll keep the 2 digits and remove the rest of the digits. So 68 will be removed, but before removing 68, it will give a carry of 1 to the preceding number 45. So it will become 7876.46. So the correct answer is 7876.46. Next question. Aggregate functions are also known as your multiple row functions. The correct answer is your multiple row functions. Question 6 was, primary law in India for matters related to e-commerce and cybercrime is its IT Act 2000. So the correct answer is your IT Act 2000. Next question is, Ravisha has stored the records of all students of her class in a MySQL table. Suggest a suitable SQL clause that she should use to display the names of students in alphabetical order. So whenever we have to arrange the records in ascending or descending order or in any kind of alphabetical order, we use the order by command. So we use an order by clause. The correct answer is order by. Next question, to remove the leading and trailing spaces from data values in a column of MySQL table we use. Here we need to understand it's given leading as well as the trailing. So whenever we remove the leading as well as the trailing, then the function that is used is your trim. Okay, if it would have been only leading, then the correct answer would have been ltrim. If it would have been only the trailing, it would be rtrim. But here leading and trailing, both the spaces are being removed, so the correct answer is your trim. The next question is, if the substring is not present in a string, the inster returns. The correct answer is 0. So I'll just show you an example here. For example, if I mention select and inster may, if I within double quotes I put Informatics Practices, and then I search for something which is not there. For example, if I search for India in this, so in that case it will actually return 0. It will not return null. So the correct answer is it will return 0. Sorry, the correct answer is your 0. So it will return 0. The correct answer is your 0. Let's move on to the next question. The next question says, what will be the output of the following code? Here it's a Pandas question. So import Pandas as PD, and we have created a series with 3 zeros. So the correct answer is, it should, if I just create a series here, if I just show it to you, yeah. So if I just create a series, for example, MySQL, and then I put an equal sign, if I put pd.series, and within parenthesis in the square bracket, if I put 3 zeros,
So what it will do is, ये क्या करेगा, it will create a series with 3 zeros and with default index numbers. So it's been created, and if I print MySQL, so now you can see here the correct answer is your third one, where it displays 0, 0, 0 thrice and then 0, 1, 2 as an index number, the default indexes. So the correct answer is the third one. Let's move on to the next question. The next question is, which of the following is a two-dimensional labeled data structure of Python? So the two-dimensional labeled data structure is your data frame. The next question is, to compare data values of commission earned by salesmen over a year, which of the following type of graph should preferably be used? Now this was a very confusing question for the students, because whenever you have to compare the values, you may use either line chart or even the bar chart also. Okay, area and scatter will not come here, but the correct answer for this question is your bar chart. The reason is, the reason being the bar chart is for the actual comparison of the two data values, we normally use a bar chart. Okay, the next question is, which of the following is not a web browser? So Opera is a browser, Google Chrome is a browser, Mozilla Firefox is also a browser, but Linux is not a browser. So the correct answer is Linux. The next question is, which of the following is not a valid aggregate function? So count is an aggregate function, sum is also an aggregate function, max is also an aggregate function, but len is not an aggregate function, it is a string function. So the correct answer is len. The next question is, the digital footprint that we leave online unintentionally. It's clearly mentioned unintentionally. So whenever we call of unintentional digital footprints, it comes under your passive digital footprint. So the correct answer is your passive digital footprint. The next question is, e-waste is responsible for the degradation of our environment if not properly treated or disposed of. Some of the feasible methods of e-waste management are reduce, then after that reuse and recycle. So the three ways are reduce, reuse and recycle. So the correct answer is your reuse. Okay. The next question is, it's an assertion and reasoning based question, wherein if both assertion and reasoning both are correct, then one or two may come. But if the reasoning is the correct choice for the correct explanation for the assertion, then it will be the second one. If it's not the correct explanation, it should be the first one. And if A is true and R is false, then third one. And if A is false but R is true, then the fourth one. So let's see the question. So the question was, a static web page does not change for each person visiting a web page. So static web page हमारा हर बंदे के लिए change नहीं होता है, हर person के लिए. Yes, it is very true. Okay. Now the reason says, when a web server receives a request for a dynamic web page, it locates and updates the page and sends it to the browser of the client. अब यहाँ पे ये बोलता है कि जब भी वेब सर्वर के पास डायनेमिक वेब पेज की कोई भी रिक्वेस्ट आती है, वो उसको लोकेट करता है. देन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इट एक्चुअली अपडेट्स द पेज एंड सेंड्स इट बैक टू द ब्राउजर. So yes, it is also true. This statement is also true. R is also true. Then answer can be from 1 or 2, both. But because this is exactly opposite, this reason is exactly opposite of what the static page says. So this is the correct explanation for the reason is a correct explanation for the assertion. So the correct answer for this particular question is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. And the explanation says, reasoning correctly explains assertion A since it clarifies that dynamic web pages are not static and can change depending on various factors. Thus both A and R are true, and reasoning is the correct explanation for the assertion A. Let's see the question number 18. Again, it's an assertion and reasoning question. The assertion says the output of addition of two series will be nan, that is not a number, if one of the elements have no values. मतलब अगर दो सीरीज हैं उसमें से एक के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है तो वो नैन रिटर्न करेगा, या दोनों में मिसिंग है तो वो नैन रिटर्न करेगा. Yes, it is very true. So assertion is true. Let's see the reasoning. While performing mathematical operation on a series, by default all missing values are filled with 0. This is false. Whenever there are missing values in a series और हम उस पर ऑपरेशन करते हैं, तो in that case
whenever there's a missing value, then it actually replaces it with nan. Because it replaces it with nan, so any arithmetic calculation on nan will always give you nan. So the third is the correct one. A is true and R is false. Let's see the next question. The next question is, what is web server? It was a theory question, and how is it different from web browser? Or the other choice question was, what do you understand by the term cookies, and give any two benefits of cookies. So a web server is used to store and deliver the contents of a website to clients such as a browser that request it. तो वेब सर्वर का मेन काम होता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेना एंड देन उसको हैंडल करना, उसको प्रोसेस करना, डिलीवर करना to a browser. Whereas browser is a software application that helps us to view the web pages. Some of the commonly used web browser are Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc. Now, let's see the OR part. A cookie, what is a cookie? A cookie is a text file containing a string of information which is transferred by the website to the browser when we browse it. किसी भी वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर पे स्टोर कर देता है, हमारे ब्राउज़र पे स्टोर कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कुकीज़. नाउ बेनिफिट्स क्या हैं कुकीज़ के? इट हेल्प्स इन कस्टमाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड. फॉर एग्जाम्पल द चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर ब्राउजिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ in the Google, if I open a website, Google website, and then I prefer using some other language instead of English, so I can change that language, and now whenever I will open my Google page, it will always show me that particular language because the information is already stored in the cookies that I prefer using that language. Okay, so it helps in customizing the information that is displayed. For example, the choice of language for the browsing. It allows the user to auto login. ठीक है, आप कुकीज़ डिलीट कर दीजिए, आपका जीमेल अकाउंट जो लॉगिन है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा. साइन आउट भी हो सकता है, मतलब लॉग आउट और मे बी साइन आउट. इट रिमेंबर्स द शॉपिंग प्रेफरेंसेस and it helps display advertisements of one's interest, etc. So all these information are stored in the cookies, and because of that it displays a specific information related to what I actually prefer to be displayed to me. Okay, now question number 20 is, Keshav has written the following query to find out the sum of bonus earned by the employees of West Zone. So if you see the question here, he wants to find out the sum of bonus, okay, earned by the employees of West Zone. In this case, they have written the command that he has given is select zone, total. Total is not any kind of the function. It should be sum bonus, okay, from employee, okay, but having cannot be used without the group by. So but he forgot an error, but he got an error. Identify the errors and rewrite the query by underlining the corrections done. So in this case there are two possibilities for the answer. Is the first one is, one can write select sum bonus from employee and then where zone is equal to West directly, because we cannot use a having because the group by is not mentioned here. Next answer can be select zone comma sum bonus from employee, then we can put a group by zone and then having zone is equal to West. That is also okay. So both of the answers are correct one. Let's move on to the next question. So differentiate between count and count star functions in MySQL. Give suitable example to support your answer. So here I have already created an example. This is a member table where we have member number and member name. So on the basis of that, the count and then count star are being explained. So count, and if we mention the column, it returns the number of values in the specified column, ignoring the null values. For example, if the following are the records in a manager table, this is a manager table, and if we give the command select count mem name from manager. So if we count mem name, so here we have the mem name as Amit, Kavrit, Kavita, but now we have null. So it will count the number of mem name with excluding null. So it will not count null. So it will actually return 3. So in this case, it will return 3 as output, as there are 3 values in the mem name column and 1 is null. So if we write select count mem name from manager, it will return 3. Whereas if count star returns the number of records in a table, that means it doesn't go and see towards the number of values in specific column. वो एक column के अंदर नहीं जाके check करता, वो सारे columns के अंदर देखता है कितने records हैं, ठीक है. So मतलब it actually goes and check the entire table and see how many records are there. So if we write select count star from manager, so here we have 4 records. So you can clearly mention these. So you can see these 4 records.
So because there are 4 records, so it will return 4. So that is the difference between a count and a count star. So you have to explain count and count star, and you also have to give to suitable example. Okay, let's move on to the next question, that is question 22. Now write a Python program to create a series object country using a list that stores the capital of each country. Okay, so यहाँ पे हमें एक series create करनी है using a list that stores the capital of each country, and then a series object, the name of the series can be country, or you can put even that on some different name also, that's okay. Assume 4 countries to be used as index of the series object are India. Now these are indexes: India, UK, Denmark and Thailand. These are indexes, but having the capitals New Delhi, London, Copenhagen and Bangkok respectively. Okay, these are the values. So if I open Python, yeah, so now if I execute my command here, so first what I will have to do is I can directly write PD. So first you have to write import pandas as PD, but right now यहाँ पे मेरा already imported है, तो हम वो नहीं लिखेंगे. So we'll just write the series name, that is country, equal to, and then after that we'll put PD dot series, and then parenthesis के अंदर we will specify the data first. So when we specify the data, we'll have to enclose it in a square bracket क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो data values हमारी capitals होंगी. So we'll put New Delhi first. Okay, ये गलती मत करना because it's clearly mentioned कि जो countries हैं they should be used as an index. So it's clearly mentioned here. So it's clearly written the countries to be used as index. So these are the capitals. So ये index नहीं होंगी, ये हमारी data values होंगी actual. So we'll put data is equal to New Delhi, comma London, comma Copenhagen, comma Bangkok. Okay, and then square bracket close, then we'll put a comma here, and then we'll write index is equal to, and then within the index we'll specify the country names. So respectively that is India first, then we'll put UK, then after that Denmark, okay, and then finally Thailand. So this will create a series for us. Close the square bracket, close the parenthesis of the series, press enter, and now if you print the series, that is country, you will get the actual output. So this is the series that's been created. India, UK, Denmark, Thailand are being used as an indexes and their capitals as their data values. So there's also one more way, we'll see that here also. Okay, so let's see the answer. So first we'll write import pandas as PD, then we'll write countries is equal to India, UK, Denmark, Thailand. This is another way wherein you can store the list in some, first of all you create a list of the countries and capitals, and then after that you write the name of the series, that is right now though it should be country, but I have written S1, that's okay, PD.series, then data is equal to capitals, comma index is equal to countries. That is also correct one. Or you could have simply written import pandas as PD, and then single line mein you could have written PD.series and data is equal to New Delhi, London, ye, then index is equal to India, UK, Denmark, Thailand, close the parenthesis. That's the correct answer. So this was the answer for question number 22. Let's move on to the next question. The next question says explain plagiarism with an example. Nowadays, or the other question was, nowadays all of us frequently use social media to connect with our friends. Give any 2 net etiquettes that we should follow while communicating on social media. So let's see what is plagiarism first. So presenting someone else's idea of work as one's own idea of work is called plagiarism. Example, if we copy some content from internet but do not mention the source or the original creator, then it is considered as an act of plagiarism. If you the answer is while we communicate on these social media platforms, we should follow social media etiquettes. So what are the social media etiquettes? We should choose our password wisely. It should contain alphabets, numbers and special characters. It should be a combination of all these 3 things. Then we should know who we are befriending. That means if we get a friend request from somewhere, we should know who or she is.
So we need to be careful while befriending unknown people, as their intentions possibly could be malicious and unsafe. And beware of fake information. So nowadays a lot of fake news or information do circulate on any social media platform, so we should be aware of all those fake news also. Okay, so these are some of the social media etiquettes while we go onto any social media platform. Okay, so let's see next question. So next question is, what will be the output of the following code? Import pandas as PD, and then they have written s1 is equal to pd.series, and then within parentheses they have written data is equal to 2 into, and within again parentheses 3,10. So it's basically a concept wherein if you use a star sign, so it actually repeats the values. So you might have studied that in class 11. So if I just simply write the command here, so if I write s1 is equal to pd.series, and then if I write data is equal to 2 multiplied by, now ये जो हमारा है ब्रैकेट के अंदर ये टपल है, सो इट इज बेसिकली टपल. अगर आप ब्रैकेट ये वाला पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, देन इट बिकम्स अ लिस्ट. दोनों काम एक ही करता है कि आपका ये जो मल्टीप्लाई कि हमने किया ये वैल्यूज को रिपीट कर देगा. दैट मीन्स 3 and 10 विल बी रिपीटेड ट्वाइस. बट यहाँ पे वो है हमारा पैरेंथेसिस है. सो लेट्स पुट पैरेंथेसिस टू शो यू द एग्जैक्ट आउटपुट. Okay, and now if I print s1, so it should display me 310 310 in 4 different lines. So first it should display 3, then in the next line it should display 10, then 3, then 10. Okay, and with the default indexes, that is 0 1 2 3. So the correct answer is this: 0 1 2 3 में अलग अलग lines में we have 310 310. So this star sign is basically your repetition operator, we call it, whenever we use it with any list or tuple. Okay, fine. So the correct answer for this question is, yeah, and the data type it will be int 64 because these are all integer values. Okay, so let's move on to question number 25. Now carefully observe the following code. Import pandas as PD. So we have this dictionary, okay, wherein we have PID, then PName, sports, points. So these all will become column. तो ये जितने भी हमारे ये बोल सकते हैं हम लोग कि जितने भी कीज़ हैं डिक्शनरी के अंदर, ये हमारी 4 कीज़ हैं. वी हैव PID, PName, स्पोर्ट्स, पॉइंट्स. तो ये चारों हमारे कॉलम बन जाएंगे. ये रूल होता है कि जब भी हम डिक्शनरी को यूज़ करके डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, देन द कीज़ बिकम्स योर कॉलम्स. एंड बिकॉज यहाँ पे इंडेक्सेस मेंशन नहीं है, कोई भी कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू करके, तो इंडेक्स हमारे जितनी हमारी ये लिस्ट में वैल्यूज होंगी, सो वी हैव 5 वैल्यूज, सो इट विल बी 0 1 2 3 4 5. So I'll just quickly create this data frame, and then after that we will attempt these questions. Okay, so I have created the data frame. Now here you can see the data frame. So we have 4 columns: PID, PName, sports and points. As per what I told you कि जितने keys होंगे वो keys हमारे columns create कर लेंगे, और indexes by default 0 1 2 3 4 आएंगे जितने हमारे list के अंदर values हैं. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इट वाज सेइंग कि वी हैव टू राइट पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग. सो इन द डाटा फ्रेम प्लेयर क्रिएटेड अबव, सेट द रो लेबल एज player 1, player 2, player 3, player 4, player 5. सो हियर इट इज 0 1 2 3 4. सो यहाँ पे हमें player 1, player 2, player 3, player 4, player 5 करना है. तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम, देन पुट राइट डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, ये इसका एक एट्रीब्यूट होता है इंडेक्स, जिसको यूज़ करके आप इंडेक्सेस को डिस्प्ले भी कर सकते हो, और अगर इज इक्वल टू लगा दोगे तो आप उसके सारे इंडेक्सेस को चेंज भी कर सकते हो. सो यहाँ पे हमने लिखा player 1, कॉमा player 2, कॉमा player 3. Okay, I have not closed this. Yeah, so player 3, then comma player 4, comma player 5, okay. So now what, and this is the answer for this first one. So player dot index is equal to, in square bracket में player 1, comma player 2, comma player 3, comma player 4, comma player 5. वो भी सारे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हो. एंटर प्रेस करेंगे, एंड नाउ इफ आई शो यू द एक्चुअल डाटा फ्रेम,
So you can see here 0 1 2 3 4 की जगह पे अब player 1 player 2 player 3 player 4 player 5 आ गया. And next question was rename the column points. हमारा ये जो नाम है इसका नाम बदलना है points to net point. तो you can simply write player is equal to player dot rename. So कभी भी हमें कॉलम या इंडेक्स के नाम चेंज करने होते हैं हम रीनेम यूज़ कर सकते हैं. और करली ब्रेसेस में हम पहले उसका पुराना नाम लिखेंगे. पुराना नाम हमारा है पॉइंट्स, दैट टू इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. देन कॉलन करके आप नया नाम लिखोगे जो सिंटेक्स है उसका. सो नया नाम है हमारा नेट पॉइंट. ओके, देन आफ्टर दैट क्लोज द करली ब्रेसेस एंड देन क्योंकि हम अभी कॉलम चेंज कर रहे हैं सो यू हैव टू स्पेसिफाई एक्सेस इज इक्वल टू 1. सो एक्सेस इज इक्वल टू 1 से आपका कॉलम चेंज होगा, एक्सेस 0 से हमारा रोज चेंज होते हैं, इंडेक्सेस चेंज होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, लेकिन वो तब जरूरत होता है इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग दिस थिंग. बट आई हैव ऑलरेडी मेंशन सो इट विल मेक द चेंजेस परमानेंट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड वन. एंड नाउ इफ आई प्रिंट प्लेयर एंड इफ आई शो इट टू यू, सो नाउ शुरू में हमारे पास पॉइंट था लेकिन अब हमारा नाम चेंज होके इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स नाउ वी हैव द नेट पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर. So this is the answer for first and second one. So if you see the answer, this is the first answer, player.index is equal to square brackets में सारे indexes. Then second is player is equal to player.rename and then parenthesis के अंदर curly braces में points colon net point then x is equal to 1. या फिर हम लिख सकते हैं player.rename and then parenthesis के अंदर एक ही parenthesis आएगा, ये दो parenthesis लगे हैं, गलत है ये. Okay. So now player.rename and then within the parentheses curly braces में points as a key and then call a net point as its value, then comma x is equal to 1, then comma करके in place is equal to true. True का T capital because Python case sensitive होता है. ठीक है, so ये भी आप लिख सकते हो. So this is the answer for question number 25. Let's move on to question number 26. So consider the table patient given below and write SQL commands. So I already have the table created in my MySQL. I'll just quickly open that. I'll open MySQL. Yeah. So here if I just simply write select star from patient. So if I write select star from patient and then in this case you can see the table here. And it says display the, it says the first question says display the details of all the patients who were admitted in January. तो जनवरी के मंथ में जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड हुए थे उनकी डिटेल्स हमें शो करनी है. सो विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर. अब जनवरी कैसे फेच करेंगे? देखो डेट ऑफ एडीएम जो है इसमें से जनवरी फेच करने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं. यू कैन राइट मंथ और ब्रैकेट में डेट ऑफ एडीएम इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप, या फिर यू कैन राइट मंथ नेम यहाँ पे लिख के एंड देन इज इक्वल टू जनवरी सिंगल कोट्स में लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट. सो इफ आई नाउ प्रेस एंटर सो यू गेट द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयज who got admitted in the month of January. So that is Rahul Arora and Somik. दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको मैं. So you could have written here month name is equal to and then after that January. Okay, and then if you press enter same output will be there. So you can either write month, अगर month लिख रहे हो तो यहाँ पे is equal to के बाद हमारी एक integer value होनी चाहिए, और अगर month name लिख रहे हो तो you have to specify the actual month name. Fine, so this is the correct answer for the first one. The second question says count the total number of patients from Delhi. So if I again show you the entire table, तो Delhi में कौन कौन से patients है, total number. So total count करने के लिए we use count star. So we can use select count bracket में star, then from patient and then where, then where के बाद हमारा आएगा Delhi कहाँ पर है, Delhi हमारा city column में. So we'll write city is equal to and then single या double quotes में you can mention Delhi. केस सेंसिटिव नहीं है, Delhi को आप कैसे भी लिखो, स्मॉल में कैपिटल में, it doesn't matter, it will still display the output. So you can see here select count star from patient where city is equal to Delhi, so it displayed me 3, and if you come here so there are 3 patients. So count the total number of patients from Delhi. So this is your correct answer. Now third one is display the last 2 digits of
लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी के आखिरी के 2 डिजिट हमें शो करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स, ओके, ऑफ ऑल पेशेंट्स फ्रॉम सर्जरी डिपार्टमेंट, सिर्फ डिपार्टमेंट जिनका सर्जरी है. सो वील हैव टू राइट सेलेक्ट, राइट, एंड देन आफ्टर दैट विल पुट पेशेंट आईडी comma 2, okay, from patient where department is equal to, and then single quotes या double quotes में surgery. Okay, now if I press enter, so you can see here surgery column, department जिनका surgery है उनके आखिरी के 2 इसने लेटर्स फेच कर लिए. सो सर्जरी में वी हैव दिस ऋत्विक, तो उसके लास्ट के 2 0-1, एंड देन सर्जरी ये है सुरेश सूद, तो उसका भी 0-5. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेलेक्ट राइट पेशेंट आईडी कॉमा 2 फ्रॉम पेशेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सर्जरी. ओके, सो लेट्स सी द आंसर हियर. सो फर्स्ट आंसर इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर मंथ नेम ब्रैकेट में डेट ऑफ एडीएम इज इक्वल टू जनवरी, और वी कुड हैव रिटन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर मंथ ब्रैकेट में डेट ऑफ एडीएम इज इक्वल टू 1. Second answer is select count star from patient where city is equal to Delhi. And the third answer is select right patient ID comma 2 from patient where department is equal to surgery. Let's move on to the next question. The next question is Kavyanjali, a chemical analyst needs to arrange data of few elements in the form of 2 series. So यहाँ पे ध्यान रखना कि the data needs to be arranged in the form of 2 series containing symbols and their atomic numbers respectively. सो दैट मीन्स पहली सीरीज़ में आपके सिम्बल्स होंगे खाली और दूसरी सीरीज़ में आपके एटॉमिक नंबर्स होंगे खाली. देयर आफ्टर जब 2 सीरीज़ क्रिएट हो जाएंगी उसके बाद द डाटा ऑफ दीज 2 सीरीज़ हैज़ टू बी अरेंज्ड एंड डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ डाटा फ्रेम. तो पहले 2 सीरीज़ बनानी है हमें. 2 सीरीज़ जब बन जाएंगी उसके बाद फिर उनको एक यूज़ करके हमें एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना है. द डाटा फ्रेम शुड लुक समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी हियर. ठीक है, सो इट शुड लुक एग्जैक्टली एज यू कैन सी हियर. सो ये हमारा डाटा फ्रेम एज इट इज़ बनाना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द सीरीज. सो लेट्स कम ऑन टू द आइडल. Okay, so the first statement that I'll have to write is to create the symbol. तो symbol में if you see this we have H. So यहाँ पे हमने एक सीरीज बनाई S1 के नाम से. आप सिंबल के नाम से बना सकते हो. You can put any name. Then PD dot series. So H, then He, then lithium, beryllium. That is ये symbol के लिए. Then indexes हमारे हो गए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. ये हमारे indexes हो गए. Now if I press enter, the series have been created for me. Now similarly, the second series that I'll create is with atomic number 1, 2, 3, 4. So data will be 1, 2, 3, 4, but the indexes will be same: hydrogen, helium, lithium, beryllium. So यहाँ पे indexes हमारे हो गए, सॉरी हमारी जो डाटा हो गए 1, 2, 3, 4, and then indexes हमारे same हो गए जो S1 में थे. So now we are ready with these 2 series S1 and S2. So if I print S1, if I show you S1, so we have the series, पहली series. If I show you the second series, we have the second series here. Now we want to create a data frame. तो डाटा फ्रेम का नाम मान लो हमने ले दिया df. ठीक है, if I put df is equal to, then after that I'll put pd dot data frame, and 2 सीरीज को यूज करके बनाना है. In that case what you have to do is you can use the dictionary, क्योंकि यहाँ पे you can mention the column name. So column name हमारा हो जाएगा that is symbol. So we put the key as the column जो भी आपको चाहिए symbol, और symbol में we need the series S1 जो हमने ऊपर बनाई थी. कॉमा करके दूसरा key value pair that is atomic number. You can even put spaces in the column name, that's okay. Then colon करके S2. So that's all you have to do, and just close the parenthesis. So this statement will create your data frame from the existing series S1 and S2. So हमारा पहला स्टेटमेंट होगा import pandas as pd. ठीक है, then you'll create series 1, then you'll create series 2, then after that you will use df is equal to pd dot data frame, and then after that key as a symbol and value as S1, and again key as atomic number and value as S2. Okay, now if I press enter, the data frame have been created. Now if I show you that data frame, so you can see exactly what they asked me to do. We have created that particular data frame. So the correct answer is import pandas as pd, S1, S2 series, then after that finally data frame. Fine, let's move on to the next question.
The next question is, consider the given data frame health. Okay, so we have disease name and agent, and write suitable Python statements for the following. So now this is basically the series that they want. So the data frame name is health, and अब इसके basis पे हमें statements लिखनी है. The first statement is remove the row containing the details of disease named tuberculosis. So if we see this tuberculosis, तो इस particular row को हमें delete करना है. So whenever we have to remove any row, we have to use their index numbers. So to delete that, the answer will be, you just have to write the name of the data frame is equal to, and then you again have to write that so that the changes becomes permanent, then dot, then you have to use drop function. Drop के बाद आपको ये बताना होता है कि कौन सा इंडेक्स नंबर आपको डिलीट करना है. So we have to delete index number 3. कॉमा करके you can even write access is equal to 0, but that's optional because जब आप access argument नहीं देते हो किसी भी drop या rename के अंदर, तो it is always 0. So you can skip that also, the output will be same. So now just press enter. So the answer for the first one is health is equal to health dot drop, और parenthesis के अंदर you just have to specify 3, the index number for the tuberculosis. So if I press enter, it's being removed. If I show you the health data frame, so it's no longer there. Next is add a new disease named malaria caused by protozoa. So हमें यहाँ पे एक और नया row इसके नीचे add करना है. So to add a new row, what you have to do is you have to specify the data frame name dot lock. तो जब भी आपको कोई row add करना है, just specify lock and then square bracket में index number. So let's put 4. I'm not putting 3 is equal to, and then after that within the parenthesis, square brackets, just mention the first value then second value. So पहली हमारी malaria आएगी, okay, then after that it is caused by protozoa, that's basically the agent. So ये दो हमारी value आएंगी. If I press enter, there's no error, so हमारी एक नई row add हो गई है. If I show you print health, so you can see malaria protozoa add हो गया है. Okay, and then the last one is display the last 2 rows. आखिरी के 2 rows दिखाने. जब हम print health लिखते हैं, मतलब डाटा फ्रेम का नाम, तो वो सारे rows दिखाता है. हमें लास्ट के 2 दिखाने. So it's very simple. You just have to write print and health के बाद you just have to put dot tail and then bracket के अंदर 2 लिखना है. That means लास्ट के 2 दिखाने हैं, तो tail और ऊपर के दिखाने होते हैं तो head use करते हैं function. So you can see the last 2 rows have been displayed to us. Okay, so these are the 3 answers. So you can see the answer here. The first answer is to remove the row health is equal to health dot drop और square bracket में index number जो delete करना है वो पूरी row delete कर देगा. Then second is to add a new disease, मतलब नया row add करना है, health dot lock and square bracket में आप 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 4 is equal to and then malaria protozoa in as a list. Then if you want to print the display the last 2 rows, just write print health dot tail and square bracket में parenthesis के अंदर 2. Let's move on to the next question. The next question is Manohar received an email from a company named Make Money Private Limited claiming that Manohar has won rupees 20 lakhs in a survey done online. In order to claim the prize money, he was required to answer a few security questions such as his name, account number, PAN card details, phone number, and OTP for verification purposes. For this, he had to click on the link provided in the email. Answer the following questions. Should Manohar give the required details to the company? The answer is no, Manohar should not give the details. Second question was, what is the activity depicted above? So this is an act of email spoofing, जहाँ पे email के through हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, and उसमें link है, वो link हमसे information से ले लेगा, and then they can misuse that particular information. Okay. Then third is what should he do with this email? So he should consider it to be a spam email and should not click on the link in email and mark the email as spam and complain about the email to cyber police station. So these all things he can do with that particular email. मतलब उस email को मतलब respond नहीं करना है किसी भी हालत में. Okay. Next question is, ये question number 29 का और part था. What do you understand by the term hacking? And write any 2 measures that one should take to avoid being the victim of hacking. तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम hacking के victim ना बन सकें. So hacking is the act of unauthorized access to a computer or computer network or any digital system. This is hacking. And 2 measures to avoid being the victim of hacking.
One must install antivirus software. We should keep a strong password for our devices. We should install firewall, and we should avoid clicking on any unknown links. So these are the measures that we can take. There can be many more measures, but these are some of the measures that one can take to avoid being hacked or becoming a victim of hacking. Next, let's move on to we should avoid installing any unknown software also. Let's move on to the next question. The next question is based on this particular table fashion. So write the output for 1 to 3 for the following SQL commands. First दोनों के लिए हमें output लिखना है. So if we come to this select count product from fashion, the table is already there in my MySQL. So I'll just quickly show it to you. So if I write select star from fashion, so ये हमारा एक table created है already. Okay, now the question says, पहले वाला question says select count product. So जब हम लिखते हैं select count and then bracket में product from table name that is fashion, okay, semicolon. So ये क्या करेगा, it will go to this particular column, product के अंदर वो जाएगा और product के अंदर गिनेगा कितनी values हैं excluding null. So Kajal is one of the value, foundation second, night cream third, day cream fourth, shampoo 5, then lipstick 6. So it should return 6 as an output. So the answer should be 6. The next question is select sum, then parenthesis में price multiplied by the QTY, okay, from fashion where product is equal to, then double quotes में हमने लिखा night cream. So if we see night cream, so if you can see the night cream here, तो अगर यहाँ पे भी टेबल देख लेते हैं नाइट क्रीम, तो नाइट क्रीम में प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 2s are 34 and then we will have 3 zeros, so it should display 34,000 as an output. So second का output 34,000. First का आंसर 6 है, second का output 34,000 है. The third is select left and then bracket में product comma 4, okay, from fashion where price is more than 1500. So if you come here, if you see price, तो एक तो 2100 है ज़्यादा और एक 1700 ज़्यादा है. दो prices हमारे 1500 से ज़्यादा है. तो इनका product का जो है product is this one, okay. इसमें लेफ्ट के 4 कैरेक्टर्स, तो लेफ्ट के 4 मतलब FOUN उठाएगा, ठीक है, FOUN फाउंड और NIGH. So it will fetch 4 characters from the left of the product. So found and nigh. So this is the correct output for the first question. Okay. So if you see the output 6, 34,000, then found and nigh. Okay. Now the second part जो इसका और वाला part है, it is not related to the table that's being mentioned. जो आपको टेबल दिया हुआ है उससे लिंक नहीं है इसका. So you can directly execute the commands. तो we can directly execute the commands. Here the first question is select subster and then bracket में climate change. Let's put it as it is, climate change, then comma 4 comma 4. So ये क्या करेगा, फोर्थ पोजीशन पे जाएगा. So यहाँ पे 1 2 3 4, तो फोर्थ पे आएगा, M पे आएगा एंड 4 कैरेक्टर्स आएगा, तो आंसर शुड बी मेट, MATE. The next is select UCase, then write, then after that double quotes में we have pollution, then comma 3, then double parenthesis close semicolon. Now what it will do is right से 3 कैरेक्टर उठाओ तो ION एंड उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ION, it will display ION in capital letters. Then the next was select length, then after that let's put happy, okay, then plus 3. So here we will count the number of characters in happy, 1 2 3 4 5, 5 characters हैं, प्लस में 3 कर देगा, so it should display 8 as an output. Okay, so the second जो और part है उसके जो answers हैं, that is mate for the first one, second के ION in capital letters and third का 8 answer है. Okay, let's move to the next question, 31. Now write SQL queries which will perform the following operations. So I'll again open MySQL because this is based on MySQL only. So here
First question says to display the year from your date of admission which is 20230515. तो हमें सिर्फ year fetch करना है. So year fetch करने के लिए you use select then year और bracket में आप date mention कर देते हो जो उन्होंने दी हुई है. So you can use single quotes or maybe double quotes, that's okay. So you'll use this as an answer. So the answer should be select year and then the date, तो it will display the year. But हमें answer में सिर्फ ये लिखना है select year, okay, and then bracket parenthesis के अंदर the date. Similarly, to convert your email ID to a lowercase, I'll just directly show you the answers because these are very simple answers. So the second answer will be select L case and then double quotes में हमारी जो email है वो आ जाएगी. Then after that, third is to remove leading spaces. अब ये ध्यान रखना leading spaces. Leading के लिए L trim use करते हैं. Okay, so L trim and then parenthesis के अंदर single quotes के अंदर my country with spaces है. To display the current date. To display the current date, we'll write select date now. I'll show you this because यहाँ पे कुछ बच्चों को confusion थी. The reason is if I just simply write select now, now आपका date और time दोनों show करता है. But because I have to show only the date, so I will put date and then after that I'll enclose that now in that date. तो हमने date को date और time दोनों दे दिया, उसमें सिर्फ वो date को fetch कर लेगा and it will display the correct output. So the output will be 203 जो present date है जिस दिन मैं ये recording कर रहा हूँ. Okay. To display the value of 10 to the power 6, so you just have to simply write select power and 10,6. So हमें सिर्फ commands लिखने हैं, हमें output नहीं बताना है, सिर्फ commands लिखने हैं. Okay. Let's see the next question. This is OR part of that 31 वाला, उसका OR part है. So we have this product table. So I have already created the product table. So I'll show it to you. Select star from product. So this is my table, product table, and now with this product table, okay, you can see the product table. We have to perform the following. So we have to perform these operations. We have to write the command, SQL command. क्योंकि लिखा हुआ है write SQL queries using SQL functions to perform the following. So we have to write SQL queries. So display the first 3 characters of all items. तो item name जो है उसके पहले 3 character दिखाने. So we'll use select and then left, okay, then item name comma 3 and then table name, that is from and then product. So this is the correct answer. So it will display the first 3 characters of all the items. सारे item के पहले 3 character item name में से fetch कर लेगा, दिखा देगा. The second question is display the name of all items whose stock day is Monday. तो हमें display the names, सिर्फ हमें नाम दिखाना है. ये चीज़ ध्यान रखनी होती है जब भी हम कमांड लिखते हैं. So we only have to display name. Name means we only have to display item name. बाकी और कुछ नहीं शो करना है. So in that case, what we will do is we will write select item name from table name, that is product, and then after that we'll put a where, क्योंकि यहाँ पे जिसका stock day Monday है. अब मंडे इसमें से कैसे फेच करेंगे? तो मंडे के लिए यू विल पुट डे नेम, ब्रैकेट में यू विल पुट दैट कॉलम नेम, दैट इज स्टॉक डेट, ओके, एंड देन इज इक्वल टू एंड देन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में यू कैन राइट मंडे, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, एंड देन अ सेमीकोलन. दैट्स ऑल. सो इफ आई प्रेस एंटर, मॉनिटर और वेब कैम जो है उनका स्टॉक डेट मंडे को था. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to display the total price of all the products. Total price of all the products मतलब सिर्फ इसका टोटल दिखाना है. इसका टोटल दिखाने के लिए we will use select sum and then bracket में price from product semicolon. So this is the correct answer. Next question is we have to display the maximum price. तो maximum price दिखाने के लिए we'll write select max और bracket में price from product. So this will display the maximum of all the prices. And the last one is display the average price of all products by the company. So I'll just show you the entire table first. Yeah. So we have to display the average price of all the products by the company named Logitech. तो हमें average price दिखाना है जिनका कंपनी का नाम Logitech है. So we'll write select AVG और ब्रैकेट में प्राइस, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइस का एवरेज दिखाना है. देन फ्रॉम द टेबल नेम, दैट इज प्रोडक्ट, वेयर कंपनी, कॉलम नेम इज ऑलरेडी देयर, कंपनी इज इक्वल टू, एंड देन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में यू कैन पुट
Logitech, okay, and then a semicolon. So it will display the average price of only Logitech products. ठीक है. So these were the 5 answers. So let's see the answer here. Select left item name, 3 from product. Select item name from product where day name stock date is equal to Monday. Select sum price from product. Then select max price from product. And then select AVG price from product where company is equal to Logitech. Let's see question number 32. So 32 के अंदर जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो because it was a lengthier question, so I have divided into 2 slides. So here we have to first on the foremost thing जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर देख लो किस आपके विंग में है. सो A3 के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है. यू कैन सी दिस, द मैक्सिमम कंप्यूटर्स आर इनसाइड दिस A3 विंग. सबसे ज़्यादा. सो A3 विंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है. सो विल जस्ट कम बैक टू द स्लाइड अगेन. तो पीछे वाली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं. तो A3 में 110 है, सबसे ज़्यादा है. सो हम क्या करेंगे, A3 में जब सबसे ज़्यादा है तो A3 का लिंक क्रिएट करेंगे A1 से. Then A3 will be connected directly to A2 and A3 will be directly connected to A4. So this is the, we can say, ये वाला जो है, ये डायग्राम जो है, ये हमें हेल्प करता है कि हमारा किस तरीके से कनेक्शन होगा. ठीक है, लेआउट, केबल लेआउट डायग्राम है ये. So A3 will be connected to A1, then A3 will be connected to A2 and A3 will be connected to A4. So this is the layout. Okay. Then we'll also see कि A3 से A1 का डिस्टेंस कितना है. इफ वी सी A3 to A1, so A3 to A1 25 meters, that's okay within the limit. Then A3 to A2, A3 to A2 ये रहा हमारा, this is also within the limit, okay. Then A3 to A4, A3 to A4 ये रहा हमारा A3 to A4, so this is also within the limit. So repeater will not be put anywhere. So now we are ready to answer the rest of the questions, okay. और बैंगलोर ब्रांच हो रहा है और ये दिल्ली की ब्रांच है. ये दिल्ली की ब्रांचेस हैं और ये बैंगलोर के ब्रांचेस हैं, okay. Now we have understood the question, so let's move on to answering the questions. So the first question says suggest the topology. तो टोपोलॉजी कौन सी यूज होगी इसके अंदर, सिंपल स्टार टोपोलॉजी. सो करेक्ट आंसर शुड बी स्टार टोपोलॉजी. एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट, जो भी मैंने आपको बनाया था. A3 to A1, A3 to A2 एंड A3 to A4, इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट होगा, ओके. सो दैट विल बी द लेआउट. Now suggest the kind of network required. So out of LAN, MAN, WAN for connecting production A3 with the Bangalore branch. मतलब दिल्ली को बैंगलोर से कनेक्ट करना है तो ultimately we'll use a WAN. So the correct answer for the second is WAN. Third is which device can be used to connect the network of Delhi branch to the internet. Delhi branch को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसमें लिखा हुआ है डिवाइस कौन सा यूज होगा. तो डिवाइस, और उसके बारे में आगे भी लिखा हुआ है दिस डिवाइस शुड बी एबल टू रिसीव डाटा, it should be able to analyze it and then transmit it to the network. So the correct is that this kind of the device is basically your router. Then is fourth one is suggest the placement of switch or hub with justification. So switch और hub हमारे चारों wings में अलग अलग लगेंगे. A1 में अलग लगेगा, A2 में अलग, A3 में अलग and A4 में अलग, and we have to also provide a justification. So the answer is switch will be placed in each wing as each wing has specific number of computers. ठीक है, तो वो डायरेक्ट उसको कनेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे. देन फोर्थ क्वेश्चन इज मेनी एम्प्लॉयज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद द वर्क प्रेशर एंड हेंस वर शोइंग स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स. In order to improve the mental health of its employees, HR planned to conduct an online session with mental health expert from Mumbai. Out of the options given below, suggest the protocol that will help to send the voice signal over internet to conduct the session successfully. तो सक्सेसफुली जब भी हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक ही प्रोटोकॉल यूज़ होता है, दैट इज़ VoIP, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द पाइथन कोड टू प्लॉट इट, ऑल्सो एड द टाइटल, लेबल फॉर x and y axis एंड यूज द फॉलोइंग डाटा फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as PLT, ओके. सो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को. देन इन द सेकेंड लाइन वी विल डायरेक्टली राइट द लिस्ट दैट इज ऑलरेडी गिवन, एस मार्क्स एंड एस नेम, हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे. देन आफ्टर दैट नाउ विल प्लॉट. अब ये प्लॉट कौन सा है, दिस इज अ लाइन चार्ट, सो यू कैन सी दैट. सो लाइन चार्ट के लिए वी यूज PLT.plot एंड देन ब्रैकेट में फर्स्ट वी स्पेसिफाई द एक्स एक्सेस. तो एक्स एक्सेस में साहिल दीपक है, साहिल दीपक एस नेम में है, तो वी स्पेसिफाई एस नेम फर्स्ट. देन एस मार्क्स जो है वो आपका वाई एक्सेस में आएगा, द नंबर्स, ओके. सो दिस विल प्लॉट द ग्राफ. देन आफ्टर दैट व्हाट विल डू इज विल पुट द टाइटल.
So the title is already, you can see the here marks secured by students in term 1. So you can see this. So ये हमारा टाइटल यहाँ पे है, ये जो टाइटल दिया हुआ है मार्क्स सिक्योर्ड इन टर्म 1. सो दिस इज द टाइटल. तो ये हमने plt.title लिख के और डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो आप. सो ये हमने पास कर दिया. देन आफ्टर दैट यू विल स्पेसिफाई द एक्स लेबल. सो यू कैन सी द एक्स लेबल हियर. तो यहाँ पे एक्स लेबल ऑलरेडी दिया हुआ है स्टूडेंट नेम, तो ये एक्स लेबल आपका आ जाएगा स्टूडेंट नेम यहाँ पे. देन आफ्टर दैट वी हैव द वाई लेबल. सो वाई लेबल इज मार्क्स सिक्योर्ड. यू कैन सी दिस मार्क्स सिक्योर्ड हियर. ओके, वाई लेबल हम लोगों ने कर दिया. एंड देन फाइनली व्हाट विल डू इज वी विल शो दैट दिस पर्टिकुलर चार्ट. सो फाइनली विल राइट plt.show. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. Even this was the or part of this question number 33. यहाँ पे हमें अगेन पाइथन कोड लिखना है टू ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ. तो यहाँ पे लाइन की जगह बार ग्राफ है. The answer will almost be same. The only difference is instead of writing plt.plot, we'll write plt.bar. So I'll show you again. So first we'll import matplotlib.pyplot as plt. Then after that, once it's being imported, we'll write both the list that's given sales and qtr as it is रहेगा, उसको change नहीं करेंगे. Then finally what we'll do is when we'll write plt.bar, तो यहाँ पे नीचे qtr1 qtr2 ये देखना है ये कहाँ पर है. तो ये qtr में, तो qtr पहले आएगा x axis का डाटा, then y axis का डाटा, that is sales. Then after that title, so you can see the title here sales each quarter, तो वो हमारा plt.title में आ जाएगा. Then plt.x label quarter में, then plt.y label sales में, and then finally we will show the chart. So this is the correct answer for this question. This was your 5 marks question. So let's move on to the next question, the question number 34. Consider the following table school data. So I have already again created the table in MySQL. So if I just show you select star from school data. So this is my table school data. So ये हमारा table already मैंने बना रखा है. Then we have to write the command on the basis of this particular thing. So we have to write SQL for the following. One second. Yeah. So we have to display the average marks secured by each gender. तो हर जेंडर में कितने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किए हैं वो हमें देखना है. तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एवरेज मार्क्स, तो मार्क्स इज अ कॉलम एंड देन ऑफ ईच जेंडर इज अ कॉलम. सो वी हैव टू डिस्प्ले एवरेज मार्क्स. So we'll write select. Okay, one second, I'll just increase its size a bit. Yeah. Now select, then we'll write gender. Okay, comma, we have to display the average marks, so we'll put avg and then bracket में marks. Then from table name, so the table name is school data, and then after that we'll put a group by, because हमें grouping करनी है, हर जेंडर का अलग अलग दिखाना है. एंड देन विल पुट ग्रुप बाय जेंडर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आउटपुट नहीं लिखना आपको, सिर्फ ये कमांड लिखना था. सो यू कैन सी मेल और फीमेल का दोनों एवरेज मार्क्स अलग अलग दिखा रहे हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10. हमें से मिनिमम मार्क्स दिखाने हैं ग्रेड 10 ने कितने स्कोर करें. सो विल जस्ट सिंपली राइट सेलेक्ट मिन ब्रैकेट में मार्क्स, ओके, फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्कूल डाटा. After that we'll write where grade is equal to and then simply 10. That's all. So this will display the minimum marks of from the school data whose grade was 10. Okay. The third question is display the total number of students in each club. हर club में कितने बच्चे हैं. And इसमें एक चीज़ और दी हुई है where number of students are more than 1. So यहाँ पे we'll write select club wise हमें grouping करनी है. So we'll write club कॉमा और काउंट करने हैं कि हर क्लब में कितने हैं. सो विल पुट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्कूल डाटा. देन आफ्टर दैट विल राइट ग्रुप बाय एंड देन क्लब. ओके, एंड देन यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है जिनका काउंट मतलब काउंटिंग एक से ज़्यादा है. सो विल पुट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 एंड अ सेमीकोलन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड वन. अगर हम और वाले पार्ट में आते हैं थर्ड वाले में, इट सेज डिस्प्ले द मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय ईच जेंडर. हर जेंडर का मैक्सिमम मिनिमम दोनों दिखाना है. तो वी कैन राइट सेलेक्ट जेंडर कॉमा मैक्स मार्क्स कॉमा एक ही साथ हम दिखा सकते हैं मिन मार्क्स फ्रॉम स्कूल डाटा
एंड देन आफ्टर दैट ग्रुप बाय, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में जेंडर यूज़ किया, सो ग्रुप बाय जेंडर. सो दिस इज द करेक्ट फॉर द और वाला जो पार्ट हमारा है. सो वी गेट द मैक्सिमम एज वेल एज द मिनिमम मार्क्स जेंडर वाइज. Okay, so the correct answer for the first one was select gender, AVG marks from school data, group by gender. Second was select min marks from school data where grade is equal to 10. Third is select club, count star from school data, group by club having count star greater than 1. And the or wala jo part tha, that was select gender, max marks, min marks from school data, group by gender. Let's move on to the last question, that is question number 35. So consider the following data frame. MDF, I'll just quickly create that data frame so that you can understand it better. So I've created the data frame MDF. Fine, so we have this data frame. So now we have to write a Python statement for the data frame MDF. First was to display the records of the student having roll numbers 2 and 3. मतलब जिसका roll number you can see here, if we come here, so जिसका roll number 2 है और जिसका roll number 3 है. So we have these 2 records. तो मतलब हमें ये 2 रिकॉर्ड हमें शो करने हैं, लेकिन कंडीशन ये लगी हुई है कि जिसका रोल नंबर 2 और 3 है, तो रोल नंबर पे कंडीशन हमारी मेंशन हो गई. सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू डू इज विल राइट प्रिंट. ओके, वी हैव टू राइट MDF, हमें शो करना है. उस MDF में हमें क्या शो करना है, हम वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लगाएंगे. अब क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन है, जब भी हम 2 कंडीशन लगाते हैं तो हम उसको पैरेंथेसिस में इनक्लोज करते हैं. तो पहली कंडीशन लगेगी, फिर वहाँ पे हम लगाएंगे और. ओके, सो विल पुट एन और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन लगेगी. और के लिए वी यूज दिस सिंगल लाइन. ओके, सो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, एंड देन वी क्लोज द पैरेंथेसिस. सो इफ आई जस्ट पुट द फर्स्ट कंडीशन, इट सेज रोल नंबर. तो रोल नंबर किस में, MDF में. सो वी कैन राइट MDF डॉट रोल NO. केस सेंसिटिव है तो रोल का R कैपिटल रखना है, डबल इक्वल टू 2. ओके, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट अगेन जो सेकेंड कंडीशन होगी वो भी होगी MDF डॉट रोल NO डबल इक्वल टू 3. एंड नाउ इफ आई प्रेस एंटर, सो इट विल डिस्प्ले मी ओनली रोल नंबर 2 and 3. सो यू कैन सी दिस. सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंट MDF, मतलब प्रिंट के अंदर इनक्लोज करना है MDF एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा इनक्लोज करना है, बिकॉज हमें पूरा डाटा फ्रेम शो करना है. देन आफ्टर दैट, बिकॉज 2 हमारी कंडीशंस है, तो वी यूज द 2 parenthesis and then because this is an or, so we put a single line. Okay, and होता तो we would have used and. So अब आप बोलोगे and लगा देंगे तो क्या होगा. अगर हम and लगा देंगे तो एक भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा. The reason is and हम तब लगाते हैं जब 2 अलग अलग कंडीशंस हमारी हो, 2 अलग अलग कॉलम पे कंडीशंस हो. सो यू कैन सी हियर इट्स डिस्प्लेड मी इन एम्प्टी डाटा फ्रेम. सो ये गलत हो जाएगा अगर and लगाएंगे. तो करेक्ट आंसर शुड बी और वाला. Next is to increase the marks of, I'll just again print that MDF. Sorry, MDF. Yeah. So we have this data frame. Next question was to increase the marks of subject maths by 4. मतलब maths के marks हमें 4 नंबर बढ़ाने हैं. So we'll just put MDF dot maths is equal to MDF dot maths प्लस 4. सिंपल, ये इसका आंसर है इसका. MDF डॉट मैथ्स इज इक्वल टू MDF डॉट मैथ्स प्लस 4. अभी मैं इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लेस देन 10 बोल रहा है, तो लेस देन 10 में आउटपुट शो नहीं करेगा. ओके, या फिर मैं शो कर देता हूँ, फिर माइनस दोबारा कर दूँगा. ओके फाइन. सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, हो गया. इफ आई जस्ट शो यू प्रिंट MDF. ओके, नाउ यू कैन सी 28 है, 32 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 11 हो जाएगा एंड देन 28. सो लेट्स सी. सो यू कैन सी हियर मैथ्स के मार्क्स 4 नंबर सबके बढ़ गए. ठीक है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट वाज MDF डॉट मैथ्स इज इक्वल टू MDF डॉट मैथ्स प्लस 4. आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंड देन सिंगल कोट्स में भी लिख सकते थे. दैट इज ऑल्सो अनदर वे. फाइन. सो आई जस्ट अगेन डिक्रीज द मार्क्स टू गेट माई ओरिजिनल मार्क्स. ठीक है, so that I can run my next command. So now if I print MDF, yeah, the third B part was write Python statement to display the roll number and name of all the students who secured less than 10 marks in maths. हमें सिर्फ रोल नंबर और नेम दिखाना है. तो जैसे हमने फर्स्ट में किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रिंट MDF, देन हमें कंडीशन इसके अंदर लगानी है. अब अगर हमें स्पेसिफिक चीज़ें दिखानी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे. अब वो 1 होती तो ठीक है, लेकिन अभी 2 हैं तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे रोल NO,
and then name. Okay, it should be case sensitive. Then यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे. अब कंडीशन क्या है? जिसके मैथ्स के मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं. सो विल पुट MDF डॉट मैथ्स ग्रेटर देन 10 बस. ठीक है, सॉरी लेस देन 10 है. सो विल पुट लेस देन एंड देन 10. ठीक है, इट्स नॉट मोर देन, इट्स लेस देन 10. सो नाउ इफ आई enter, it should display me the roll number as well as the name of only those students whose maths marks is less than 10. तो वैसे less than 10 तो एक ही बच्चा है दीपक, तो it should display 4 and दीपक. Okay, और index number तो आएगा 3 क्या. So you can see here roll number और name, that is दीपक उसने show कर दिया हमें. Okay, the last one is और वाला part में write Python statement to display the total marks, that sum of marks secured in English, Hindi, maths for all. So I'll again print that MDF for you. Okay, so we have to display the total. So you just have to write print MDF dot sum of marks secured in English. So it should be English. Then plus MDF dot Hindi plus MDF dot maths. So this will add the marks of English, Hindi, maths and then show it to you. So you get the total of all the marks. ठीक है, so ये और वाले पार्ट का आंसर है. So that was an easier one as compared to this B वाला. ठीक है, that's okay. So these are the answers for the last question. Okay, fine. So thank you. And you can see the compare your whatever you have attempted, though you cannot change that, but at least you should know that. Thank you.